See, one gas is occupying the volume V1 equal 2.74 decimeter cube. Then the pressure is 0.9 bar. Temperature 27 degrees Celsius is there. Then at this condition, what is the volume? So pressure, what happened? Pressure is decreased. So volume क्या है वो find out करना है. Of course, temperature also change. Whenever PVT, three are there means three relevant formula is ideal gas equation. PV equal to nRT. So I am taking here PV equal to nRT. So here nR, so gas is same था. वो पहले 1 मोल है तो अभी भी 1 मोल है. पहले 10 मोल है तो अभी भी 10 मोल है. ठीक है? Number of moles of gas is quantity of gas is same. So n is the constant. R तो गैस एक ही गैस था वो, मे बी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और whatever it is. In the question he did not say anything about changing the gas. Gas is the same. Just container में what happened? Pressure and temperature change. That's only. So nR दोनों केस में constant था. So first condition में P1 T1. Then second condition में P2 V2 equal to P2. Equation number 1 and equation number 2. Okay. So if you take it, this both are constants only. Here nR is the constant. So from this P1 V1 by T1 equal to some constant K I am writing nR. In the from this P2 V2 by T2 equal to again K constant. This constant is same क्योंकि n number of moles सेम था और गैस कांस्टेंट तो सेम था. ओके, इक्वेशन नंबर 1 and 2 से I can write 1 equal to 2. So finally the formula is P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T. Just tell me the values here. P1, what is the value? 2.74 volume V1. Sorry, no, pressure first. 0.9, right. Then T1 temperature 27 degrees Celsius. Always you have to convert into Kelvin. So 300. Then P2 pressure is 0.75 into V2 with the calculate करना है. Temperature 15 degrees Celsius, that means 288. Okay. So see 2.74. See, approximately I will take it. So what is the value we can check it. So 0.9 मतलब almost 1. Okay, 2.74 is there. 1 है तो 2.74 आएंगे. 1 से कम है मतलब 2.6 होगा में. ठीक है, roughly we will do that. See, हमको MCQs में identify करना है चारों ऑप्शन में. See, ठीक है. So approximately I am taking 2.7 by 300. Then 0.75 ठीक है. अभी हम कुछ कर सकते हैं इसका. See 75. See one thing I can do here. 288 is there, 300 is there. So 300 है तो cancel कर सकते हैं. 288 मतलब 1 point. How much is it? 12. 12 means 1.01 कुछ खाएंगे. So I am taking approximately I will take it as 1.1. See देखते कितना होगा. क्यों why I am taking इतना blindly नहीं ले रहे मैं. तो 12 था. 12 मतलब if I take point 0 आएगा 120 उससे भी कुछ नहीं होगा और 0 रखना पड़ेगा. 1200 है. 1200 मतलब मेरे को आएंगे exactly है तो 1.06 कुछ होगा. 1.06 मतलब अप्रोक्सीमेटली हम वो 5 से एबो है तो एक लिख सकते हैं ना. दैट्स व्हाई आई रिटन हियर 1.1. See, I am not telling you exactly you will get answer. Approximately you will get it. So 2.6 by 1.1. So what about here 0.75 by तो 1 हो गया. So into V2. So 0.75 by 1.1. So I can write here 26 by 11 into, if I want to write 75, 0.75 को 75 लिखना है तो 10 power minus 2 लिख सकते हैं. That equal to V2. 10 power minus 2 रहने दो, ऊपर गए तो प्लस 2 हो जाएगा.
Now 25 1 जा 25 3 जा. Okay, 1 by 33 into 10 power minus 2. Okay, so 1 by ये plus 2 हो जाएगा. That means 100 by 33. क्या होगा? 1 by 3 is how much? Approximately 3.2 or 3.3. Calculate the mass of 0.12 decimeter cube of nitrogen at 150 degrees Celsius. Wait. मैं लिखता है. See, 0.12 decimeter cube of nitrogen is there. हाँ, आगे. At 150 degrees Celsius. At 150 degrees Celsius And 0.987 bar. 0.987 bar. Okay. Then आगे. Calculate the number of atoms or molecules. Mass. Okay. Calculate the mass. Calculate the mass of nitrogen. This is the main question. Okay. First of all, what are given here? Volume is given, temperature is given, pressure is given. These three given means we know the formula PV equal to NRT. PV equal to NRT. PVT. हमको N तो फाइंड आउट करना है. R तो कांस्टेंट है. R value based on these units we have to take. R का many values are there. सर मेरे को R value 2 पता है, यही लेता हूँ, नहीं चलेगा. ठीक है, ऑप्शन में कैलोरीज देते तो कैलोरीज में कन्वर्ट करके करना है. ठीक है, सो ऑप्शन तो दिया ही नहीं. सो हियर बार इज गिवन, डेसीमीटर क्यूब इज गिवन. सो अकॉर्डिंग टू बार जनरली लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 होता है. सो बार लेते तो 0.083 होता है, क्योंकि बार एंड प्रेशर रेडियन तो बहुत सिमिलर है. 1.13 इट इज 1 only, दैट्स. चलिए, सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू. प्रेशर कितना था? 0.987. वॉल्यूम 0.12 इक्वल n. तो वही कैलकुलेट करना है. मैं r नीचे ले रहे इधर. r 0.083. टेम्परेचर प्लस 273. क्या? 423. So 423. 0.987 मैं ऑलमोस्ट 1 मान सकते हैं. इसका 99 है तो ऑलमोस्ट 1. 998 भी तो ले सकते हैं. ये तो 7 है, 99 ले सकते हैं. 0.99 मतलब तो 1 ले सकते हैं. 0.12. ठीक है, that implies n equals 1 into 0.12 ऑलमोस्ट 0.12 ओनली. हो सकता है 0.11 भी ले सकते हैं. ठीक है, 12 लेंगे. लेकिन मेरे को पता है ये 0.12 से थोड़ा कम होगा, ये माइंड में रखना है, क्योंकि हमारा ऑप्शन तो सेलेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. 0.12 से थोड़ा कम होगा. चलो आगे. 0.083, 423, 3 digits. मतलब इधर इफ आई कीप पॉइंट हियर आई कैन 2 digits here. So 8.3 into 4.23 is nothing but. Yes. So 8.3 है, 4.23 है. So if I take it 8, ये तो 4.5 लेना पड़ेगा एटलीस्ट. नहीं तो if I take it a 4, इधर 8.5 लेना पड़ेगा. एक कम करे तो थोड़ा एक ज्यादा करना है अप्रोक्सीमेट. So 32 plus 4, 5, that means approximately 37 I will get it. 8 4 जा 32. ये एक्स्ट्रा वैल्यूज है ना, approximately 37 I will get it. So here I can take it 120 10 power minus 3 upon 37. See 48 है exactly 3. So 40 नहीं था. ठीक है. So लेकिन ये 120 भी नहीं था, 120 से तो कम ही था. So approximately नहीं 3 कितना आया था तुम लोग? 0.035. सी इतना एवरेज कर रहे हैं मैं मेरे को -3, that means 0.035
003 या सिंगल 03? 0.03 आ गया, 035 C 120 no 3 minus 3 12 2 digits 8.3 4.3 right. That is right. 987 को 1 लिया 0.1 fine. So 10 variation आ गया. That is 4 बेटा 0.003 is answer. See, एवरेज किया वही सही है 0.003 ये तो सही है 10 power minus 3 means ठीक है. सो एग्जैक्ट वैल्यू है तो 0.0034 ठीक है. सो इतना एडजस्ट करें तो भी मेरे को ऑलमोस्ट आ गया. हाँ इसके बाद क्या है, व्हाट इज दिस आंसर? दिस आंसर इज द मोल. दिस आंसर इज द मोल. We already know that 1 mole equal how many? 1 mole equal nitrogen is 28 grams. मैं सोचा एटम मॉलिक्यूल का भी कैसे भी पूछ सकते हैं. इसके बाद how many atoms are present, how many molecules are present, what is the mass of the gas, three types of question. How many molecule है तो 1 mole equal to 6.023 × 10⁻23 वो लिख सकते. नहीं तो अभी मास पूछा था ये क्वेश्चन में. 1 mole equal to 28 grams. These many moles equal to how many? What is this? 0.0034 into x cross multiplication. Then x equal to क्या है? ये दोनों का multiplication. So 28 into 34 into 1 2 3 4 10 power minus 4 is upon 1. Step understood? Cross multiplication. ये दोनों equal to that. Then x equal 10 power minus 4 ऐसे रख दो. 2.8 see अभी मैं ये लिख सकते 2.8 and 3.4 लिख सकते तो I can take it -2 क्योंकि इधर से 10 इधर से 10 निकाल दिया -2 हो जाएगा. चलो 2.8 means approximately 3 into 3.4 3.4 मतलब थोड़ा कम कर. ये तो ज्यादा लेने तो ये तो कम लेना पड़ेगा. ठीक है. So what I am taking here 3 into 3 approximately 9 into 10 power minus 2 something like this. See I will see the exact answer 0.095 0.095 is accurate answer. I took it 0.09 आ गया. Understood? See, depends on the options. वो नजदीक 0.9, 0.95, 0.85 ऐसा है तो more accurate करना. एक तो 0.9 दिया. Generally option you can see वो मटेरियल में भी रहता है. एक ऐसा रहता है 0.9 रहता है, 0.09 रहता है, 0.009 रहता है, 10 रहता है, ऐसा रहता है. इतना तो वेरिएशन होगा. सो आराम से यू कैन आइडेंटिफाई. समझ गए? दिस थिंग यू कैन गेट इट बाय सी आई फॉरगॉट वन पॉइंट देयर. इन द बॉयल्स लॉ वी टुक द ग्राफ्स. यस दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर देयर. यस्टरडे नोट्स है सो वो नोट्स में लिख दो. सी हियर द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ग्राफ. सो वी गिवन दैट T1 T2 T3. Then the condition also is written that T3 is the higher than the T2 than T1. Okay, these graphical lines are known as isotherms. Just the word you write. These lines are known as isotherms. Thermo means temperature. Iso means same temperature. The graphical line which is drawn here at constant temperature. Isotherm. Okay, graph already tha. Just you write these are known as isotherms. If you want more, isotherms are nothing but
the graphical lines at constant temperature. Isotherm. Next, Charles Lamé, we did that volume versus T. Dotted line. So what was the constant here? Pressure. P1, P2, P3. The upper one is, lower one is more pressure. P1 is higher than P2 then P3. Okay? ये thermodynamics में आता था. Isobaric. Bar मतलब pressure का unit. You know that? Isobaric. Isobaric. Isobaric process बोलते हैं वो thermodynamics में. These are isobars. Isotherm, isobaric. Then volume constant है तो isochore बोलते हैं. If volume is constant, V is constant, the graphical lines are known as isochore. Isochoring process है तो system है तो isochoric process. What exactly? Isochores, no? That's isochores. Isotherm में temperature था. Iso same temperature. Isobar means pressure is constant. Isochore ये थोड़ा different है. Core में volume. ठीक है? These three words. Thermodynamics में again we will get in these processes. Dalton's law of partial pressure. So what it is? See, in a container, suppose carbon dioxide is there, nitrogen is there, and oxygen is there. Three gases. Even in our room also, maximum nitrogen gas is there, oxygen, smaller amount of carbon dioxide also is there. The total pressure, we know that room temperature 1 atm, 1 atmospheric pressure. So this container also same 1 atm is there, suppose 1 atmospheric pressure. If 1 atmospheric pressure is raised by these all molecules. Yes. Now the question is, what about nitrogen raising pressure? We don't know exactly, but the nitrogen raising pressure plus oxygen raising pressure plus carbon dioxide raising pressure equal to P total, that equal to 1 atm. वो कंटेनर का प्रेशर इतना तो पता है. Now this nitrogen pressure, individual pressure, is called partial pressures. This pressure is called partial pressure. Nitrogen pressure is partial pressure, oxygen pressure, again oxygen partial pressure. The sum of all partial pressures equal to container pressure or total pressure. Sir, हमको कैसे मिलेगा P into? See, pressure is raised by collisions of molecules. ठीक है? Nitrogen generally we know that more than 70% almost. So maximum pressure raised by nitrogen molecule. So the pressure is directly proportional to the number of molecules. So here